हेलो एवरीवन। तो आज बड़े दिनों बाद मैंने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं। और आजकल मार्केट जो चल रहा है वो तो सबको पता है कि इट इज़ नॉट मूविंग एनीवेयर एंड वी आर स्टक इन अ रेंज। तो मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि लोग यही कह रहे हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक एनी मनी। और वैसे भी आई थिंक 20 से 22 मंथ्स हो गए हैं। सितंबर 2024 वाज द लास्ट टाइम व्हेन वी सॉ द हाई ऑफ द मार्केट, और उसके बाद इंडेक्स तो चला ही नहीं है। तो अब बहुत सारे लोगों के मन में यही विचार है कि कैसे हम पैसा बना सकते हैं मार्केट में, इवन इफ द मार्केट इज नॉट मूविंग साइडवेज। तो क्या हम एक्चुअली पैसा बना सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन। एंड द आंसर इज येस, यू कैन स्टिल मेक अ लॉट ऑफ मनी इफ द इंडेक्स इज साइडवेज और द मार्केट एज अ होल इज नॉट मूविंग। ठीक है। तो अब ऐसा ब्रॉड रैली तो नहीं है मार्केट में, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी भी पैसा बनाते हैं। तो हमेशा ये याद रखना कि इवन इफ द इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन, हमेशा एक ऐसा बिजनेस होता है जो पैसा बनाता है इवन इन दिस काइंड ऑफ कंडीशंस। तो पहले अगर आप देखोगे तो एक बजाज फाइनेंस का एग्जांपल होगा, विच मेड अ लॉट ऑफ मनी इवन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस। जो 2009 का क्रैश हुआ था, तभी आप देखोगे तो स्टॉक लाइक बजाज फाइनेंस डिड वेरी वेल, इवन दो दैट इज द वर्स्ट टाइम फॉर द फाइनेंस स्टॉक्स। लेकिन बजाज फाइनेंस, क्योंकि वो स्मॉल टिकट साइज में लेंड करता था एंड इट वाज अ कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस। सो ऑफ कोर्स इट हैड अ लिटिल बिट ऑफ इश्यूज हियर एंड देयर, लेकिन वो बिजनेस अच्छा कर रहा था, ग्रो कर रहा था। एंड दे वर द फर्स्ट टू अडैप्ट द टेक्नोलॉजी एंड ग्रो दैट टाइम। तो इस वजह से दे वर एबल टू समहाउ मैनेज दैट टाइम। तो अभी इस टाइम भी ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस है, और देर आर गुड स्टॉक्स लाइक यू कैन लुक एट नेटवेब टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट यू कैन गो थ्रू दिस बिजनेस एंड सी द ग्रोथ। ठीक है। तो नेटवेब इज गिविंग यू ग्रोथ ऑफ मे बी 50 to 60% काइंड ऑफ अ ग्रोथ। ठीक है। और ठीक है, इसका पी थोड़ा हाई दिखेगा, बट दैट इज फॉर अ रीजन। हाई पी स्टॉक्स, इफ दे आर गिविंग यू गुड काइंड ऑफ ग्रोथ, तो दे विल बी एक्सपेंसिव, और एक्सपेंसिव विल ऑलवेज बिकम मोर एक्सपेंसिव। ठीक है। तो ये वैल्यू ट्रैप में नहीं फंसना है कि यू बाय समथिंग विच इज चीप 15-20 पी वाला, एंड देन द ग्रोथ इज ऑफ ओनली 10-15%। तो आइडियली अगर हमारा ग्रोथ है जीडीपी का इज अबाउट 8% एंड इन्फ्लेशन इज से अबाउट 6-7%, तो 15% से ज़्यादा अगर ग्रोथ नहीं होता है तो देर इज नो पॉइंट इन बाइंग अ स्टॉक। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल्स का ग्रोथ। ऑफकोर्स पैट हैज़ टू फॉलो। ठीक है, जो प्रॉफिट होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो नेटवेब एक एग्जांपल हो गया। देन यू लुक एट ईथर एनर्जी। ऑफ कोर्स द बिजनेस इज नॉट प्रॉफिटेबल, लेकिन ये एक स्टार्टअप है जो जिसको मैं अभी कहूँगा कि इट्स बिकम अ यूनिकॉर्न, बिकॉज लुक एट द सेल्स इट इज एबल टू डू, एंड इट इज अबाउट टू रेज मनी राइट नाउ। और गवर्नमेंट ने भी 1 लाख करोड़ का एक R&D सेटअप करने के लिए फंडिंग, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द फंडिंग। सो दे आर लुकिंग टू हेल्प दिस ईवी गाइज टू ग्रो एंड एक्सपैंड। तो वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो इस तरह एथर हो जाता है। देन यू हैव गॉट मनोरमा इंडस्ट्रीज। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स। अगेन अ चॉकलेट कंपनी दैट इज एबल टू ग्रो इन दिस काइंड ऑफ कंडीशंस। देन यू हैव गॉट विंटेज कॉफी। ठीक है, विंटेज कॉफी भी एक बहुत अच्छा, इट इज़ अ गुड स्टॉक। ठीक है, दे मेक श्योर दैट coffee is exported all over the world, and they have got a good hold over this. ठीक है, अफ्रीका से वो they get the cocoa seeds and everything, right? So of course they are trying to replace that also by getting some alternative। तो वहाँ भी एक ग्रोथ है। तो ऐसा और एक बिजनेस हो गया। ठीक है, where there is growth, then you can look at electronics। ठीक है, GNC Electronics, you can look at that। तो refurbished laptops जो हैं, they are getting sold like hotcakes, because if you go to buy a laptop or a desktop today, new one, ठीक है, it's going to be very expensive because of this chips and semiconductors that have become very expensive। तो इस वजह से ये होता है कि you need some alternative। So if someone is, and even this IT professionals, अगर वो डेस्कटॉप या लैपटॉप लेने जाते हैं जिनका वो स्पेसिफिकेशंस, द काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन दे नीड, आई थिंक इट कॉस्ट नथिंग लेस देन 4-4.5 lakhs। आई नो फ्यू पीपल हु आर इनटू आईटी, एंड जो उनका जो रिक्वायरमेंट होता है ना, वो 3.5-4 लाख के नीचे उसका पीसी नहीं आएगा। एंड मे बी नाउ इट्स बिकम 5 lakhs नाउ बिकॉज ऑफ दिस वट एवर इन्फ्लेशन यू कॉल इट, और फिर ये जो चिप्स एंड द रैम what they need, this kind of specific whatever requirement they have। तो उस वजह से यही है कि
GNC Electronics is doing very well. You can look at that, again a 40 to 50% growth engine. So there are multiple businesses which are giving you this 30-35% का growth engine. So ideally you have to be placed in these kind of businesses. तुम्हें ये सब खरीदना पड़ेगा अगर तुम्हें पैसा बनाना है तो, ठीक है. And so these would be only 60-70 businesses, and maybe there are about say 5,500 listed companies. तो 1% चांस है तुम्हारा कि अगर तुम ये स्टॉक्स को लेते हो, इन स्टॉक्स को लेते हो तो पैसा बनेगा. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी इन सच अ मार्केट, क्योंकि your chance is only 1%. So if you buy anything apart from these maybe 60-70 stocks which have got growth, paisa nahi banega. So it becomes very very precise, in this kind of a bear market. तो पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बुल मार्केट में तो हर कोई पैसा बनाता है. म्यूचुअल फंड में डाल दो, कोई पेनी स्टॉक ले लो, वो चढ़ जाएगा क्योंकि मार्केट में फ्लो है, तो यू मेक मनी. एंड देन एवरीवन थिंक्स दैट दे अंडरस्टैंड द मार्केट, और उनको लगता है कि मार्केट में तो पैसा बनता है. एंड देन दे start believing that when you put money, you'll make money in the market always. अभी ठीक है, इसी वजह से I think कोविड के रन के बाद this is the first time, when this new investors have faced this kind of a bear market. But this is how it has always happened. 2016 से 19 तक भी ऐसे ही था, this phase. And then we are seeing it again. So what I would say is you need to be very stock specific. ऐसे ही करना पड़ेगा. रीड एंड फाइंड आउट व्हाट द बिजनेस वांट्स टू डू. कौन कॉल अगर आप पढ़ोगे तो उसका गाइडेंस देता है वो बिजनेस, वो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको. देखना पड़ेगा कि इफ द मैनेजमेंट इज ऑल्सो इवन कॉन्फिडेंट अबाउट द बिजनेस, ठीक है. तो ये सब देखना पड़ेगा. लॉट ऑफ बिजनेसेस विल हैव हेडविंड्स, ठीक है. वॉर की वजह से हो सकता है कि लॉजिस्टिक्स का इशू आ जाए, एक्सपोर्ट्स का इशू आ जाए. सो हाउ इज द बिजनेस ट्राइंग टू अडेप्ट टू इट, दैट इज हाउ इट इज. तो ठीक है, अभी तो सर्वाइवल मोड है. आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस वॉर विल गो ऑन, नो वन कैन टेल यू दिस. बट योर बेस्ट बेट इज टू कीप इन्वेस्टिंग इन बिजनेसेस दैट कैन अडेप्ट द बेस्ट, और ग्रोथ को इंटैक्ट रखे. अगर आप ऐसा करते हो तो आई थिंक विद द वैल्यूएशंस, विद द काइंड ऑफ वैल्यूएशंस, आई मीन इवन दिस गुड ग्रोथ स्टॉक्स हैव बिकम वेरी चीप. इट इज़ इजीली पॉसिबल टू डबल योर पोर्टफोलियो इन 24 months, ठीक है. तो ये एक पॉसिबिलिटी है. एंड इफ यू वर्क ऑन दैट, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन. You just have to read and keep finding these businesses. I keep referring the names, ठीक है, on my X account also, ठीक है. I just give examples, no recommendations of course, because there's no point in recommending also, because if I like a business today, then you have to check at the point when you're buying कि if it makes even sense, ठीक है. उसका P क्या है, उसका growth क्या है, वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा. बिकॉज समटाइम्स द स्टॉक जस्ट गोज ओवरबोर्ड, वो बढ़ जाता है, और फिर तब आप लोगे तो मे बी द डील इज नॉट दैट स्वीट दैट डे. बट देन अगेन इट डिपेंड्स हाउ द गाइडेंस इज, हाउ बिग इज द ग्रोथ, ठीक है. अदरवाइज मेक्स नो डिफरेंस ऑल्सो टू बाई समथिंग विच इज लिटिल एक्सपेंसिव, क्योंकि वो अगर 100 का स्टॉक अगर आप 120 को भी ले लेते हो, बट देन द गाइडेंस इज दैट इफ इट कैन multiply the PAT by 4 times, then definitely the stock can become 400. So makes no difference if you buy it at 120, 130, 140. लेकिन हाँ, ये guidance execute होना चाहिए. You have to keep checking this. So again, I think there is nothing to worry. India का जो economy है, ठीक है, slow down आ रहा है. We have issue with the crude oil rising up. Inflation might catch up, but ठीक है, it is not that the businesses will collapse and the country is going to be shut down. ऐसा नहीं होगा. That is the fear what you have in your mind, and we try to extrapolate things. ऐसा नहीं होगा. Be very rational and बी इन दिस ग्रोथ स्टॉक्स, ठीक है. अगर आप एच डी एफ सी बैंक ले लेते हो तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसके अंदर 4% का ग्रोथ आता है सेल्स का, ठीक है. ईपीएस उसका 3.5-4% ही बढ़ता है, तो वो स्टॉक 3.5-4% ही बढ़ सकता है. इट कैन नॉट गो अप, rather it will go down. And the kind of issues that HDFC has had in the past, I mean, whatever it is, news hai, because again market is affected by sentiments also. तो वो sentiments के वजह से, and anyway the flow of bad news is always there. So don't buy these kind of stocks, because ये तो already बढ़ चुके हैं ना. These stocks you should have bought them maybe 25-30 years back. I mean, of course, you could not buy them 25-30 years back if you are a 30-year-old kid. तो वो तो नहीं होगा. I
mean, of course, 30-year-old kid is just a way to say it, but then, of course, time catches up fast. So, what I mean to say is that, don't have this bias कि अगर इसने पैसा बनाया तो ये बनाएगा, ऐसे नहीं होता. छोटे बिजनेस को ढूंढना है, छोटा बिजनेस यानी फाइंड समथिंग विच इज इन बिटवीन 1000 to 3000 4000 kind of a market cap, and that can keep going up to maybe 4 5 times from there. So that is the skill right now. Plenty of opportunities in India, बहुत सारे businesses है, and if you can find them you can make money. And these stocks don't fall much. मतलब mid cap हो या small cap हो, अगर उसके अंदर growth है ना, तो you still can make money. Of course, don't go with the stocks in which you have to buy in lots. ठीक है, वो SME वाले stocks जो होते हैं उनको थोड़ा avoid करना, because then उसमें liquidity का issue आ जाता है. If you have any issue in the business, you come to know, what you thought, अगर वैसा नहीं होता और अगर आपको फिर पैसा निकालना तो बड़ी दिक्कत आती है, liquidity का issue होता है, तो avoid those 200 500 1000 crore, maybe 1500 also. SME अगर है तो उसको avoid करना. Go for pure listed stocks. Then, of course, if you buy them small or a mid size, में, you can still make a lot of money. V2 retail has done very well. Again, a good stock. ठीक है, मेरे ख्याल से वो कुछ 15x हुआ है in last 4 5 years. You can check the chart. And then it's a stupendous amount of growth. हर जगह बढ़ रहा है, and they plan to grow at 50%. For next maybe 3 4 years. तो जब ऐसे businesses हैं, who are thriving even in this kind of economy, it gives immense confidence कि इंडिया का जो growth story है वो definitely intact है, लेकिन it is only in certain parts. राधा किशन दबानी, if you have read about him या कभी सुना होगा, तो आप जानते हो कि ही इज अ मैवरिक इन्वेस्टर, एंड ही सेड दिस वन थिंग. एक चीज उन्होंने बताई थी कि बाजार में जो बुल रन होता है ना, वो हमेशा होता है. इवन इन अ बेयर मार्केट ही सेज देयर इज अ बुल रन, एंड विच इज वेरी ट्रू. देयर विल बी ऑलवेज सम स्टॉक्स वेयर द मनी विल बी मेड. ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे स्टॉक्स पैसा नहीं बनाता, ऐसा कभी नहीं होता. सो आई थिंक दैट इज द गेम वी आर इनटू. द होल आइडिया ऑफ डूइंग रिसर्च इज टू फाइंड द स्टॉक्स. 1% का चांस होता है, एंड आई थिंक इफ यू कैन रीड अराउंड एंड देन फाइंड देम, you can make a lot of money. Of course, a lot of people around there, who keep tweeting also. कोई बिजनेस होता है तो कम से कम उसके बारे में लिखते हैं, तो यू कैन रीड देयर ट्वीट्स, एंड ऑफ कोर्स नॉट टेक एनीथिंग blindly होता है, and then just put your money there. You can go out, read, and then analyze yourself, and then see if it fits in the growth thesis. And then of course you can slowly build positions and then explore, and then of course diversify your portfolio. Have at least 30 to 35 stocks, because when you're playing with this small cap companies or mid cap companies, you need to have that flexibility. By chance something goes wrong, you're not hurt much. So allocation उसको maintain करना है, and of course if a business keeps doing well, then you keep rewarding also. But never ever blindly put all your money in just maybe 3 4 stocks. So a lot of people think that they'll just buy 4 5 stocks and they're going to become rich. ऐसे नहीं होता. Even the top HNI investors, they diversify. So you look at any person who has become rich in stock market, उनके पास diversification हमेशा होता है. Concentrated bets are very risky, because no one knows what is going to happen. Life is very uncertain, and especially जब हम इस environment में रहते हैं, you don't know what kind of a war is going to come anytime. So that is what it is, and I think you just have to be calm and make sure that you do your research and not get affected by this generic news कि पैसा नहीं बनता है. पैसा ज़रूर बनता है, बनाने वाला चाहिए. You have to just find the right businesses and keep reading, and that is the way to go. Otherwise, of course, if you do not know stocks, then for mutual funds में तो you'll have to wait for maybe a broad rally, or you can invest in certain mutual funds that are small cap oriented, mid cap oriented, जहाँ पे fund manager का stock selection थोड़ा aggressive है. He's not buying the typical businesses that lack growth. So if the fund manager can do that, then obviously you still would make money. So again, it's very generic कि इंडिया में पैसा नहीं बनेगा. I think India is the best market to make money.
Of course, the market has been dull, but that does not take away anything from India. और ये जो FIS ने पैसा लगाया है in US and South Korea, ये जो semiconductor AI का boom है, it is of course a bubble that will burst. ये तो गुब्बारा जो ये फूटने वाला है, because the valuations have gone up. There's overheat in the market. Of course, they have made crazy returns. I think 140, 150 का return बनता है, 150% का return बनता है. And these countries like South Korea and all. And if the market corrects, they will not go up for maybe a few years. That is also quite possible. तो जब वो correct हो जाता है, all this money has to come back to India. I think be a little patient, be a little rational, और हड़बड़ाहट नहीं करनी. I think you will always make money. If you can just wait maybe for a 6 month or a year's time, you'll see that money comes back. India is a very structural economy, and I think things will get sorted out. So make sure that you're buying good quality growth stocks. And of course, FIs will come back because value is there. So when they come back, these growth stocks we are just going to fire, and you will make a lot of money. Even my portfolio is up, today by close to 2%, even in this kind of a market. So that is very good. I think I have got all growth stocks, so they don't fall much when the market goes down. And of course, if there is a positive news, then definitely they would be the first to keep going up. So that is all. And I think stay away from generic news. थोड़ा read कर लेना growth stocks के बारे में. Try to find them, or try to be in company of people who are investing in growth stocks, if you are even interested in stock picking. But you have to be very careful. Few stocks only would make money out of a few thousand. So um, be very picky, and definitely will make money. Be a little patient. You cannot expect all the stocks to go up at once. So be selective, diversify, and have faith in the market, and keep reading, and keep working on your skill. So the more time you give to this, the better the investor will become with time. So that is all it is. Enjoy the game of investing, and keep making a lot of money. So that is all for today. Thank you.